Hello, students. Hello, everyone. Welcome to the session. Let me just check the entire audio and video thing. Seems to be okay from my side. How's life? Good evening, Saurabh. Good evening, Sia. Good evening, PK. कैसी चल रही है जिंदगी? अच्छा, so now you must have come to know कि we have changed the schedule, right? I'm doing good, Saurabh. YouTube का schedule थोड़ा सा change हुआ है, so there would be one live class on daily basis at 8 p.m. On daily basis, there would be one class at 8 p.m. And week में we will conduct one marathon. So you will get 6 live sessions, 2 each from QA, VARC, QA, VARC and DILR. Plus there would be one marathon every week of close to 5 to 6 hours. All 3 sessions, like all 3 sections. And this is not it. We did this because we wanted to increase the number of the engagement on YouTube. In addition to this, we will be giving you 4 videos each. 4 videos each, like 4 from QA, 4 from VARC and 4 from DILR every week. So 12 videos in addition to this. Welcome. Good evening, Sandeep. बढ़िया सर. मॉक में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे सौरभ. ओके, क्लास नहीं हुआ इसमें. नहीं, आई एम नॉट इल. माई क्लासेस वुड बी ऑन. The classes will be conducted all 7 days. Okay, my sessions. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है. My sessions would be on Thursday and Sunday. My live sessions would be on Thursday and Sunday. In addition to this, I would be part of marathon on Saturday. I'll be conducting a marathon. I'll be part of the marathon team. Okay. In addition to these, one video every day. जिस दिन मेरी क्लास नहीं है, so Monday and Sundays you don't have my live class. All other days, one video. Okay. So technically, and we will be adding few mock tests as well. So this is my schedule. I would be live on 3 days a week: Thursday, Sunday and Saturday. Okay. चलो सर, आपने कल कब क्लास लिया? मैंने कल क्लास ही नहीं लिया ना. किधर लिया छोटू? आई डिडंट टेक एनी क्लास यस्टरडे. चलो ट्राई दिस क्वेश्चन टुडे इन दिस स्टेप अप सीरीज. क्या करेंगे हम लोग? देखो, स्टेप अप सीरीज में व्हाट वी आर डूइंग, शुरुआत करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता नहीं है, राइट. एंड देन वी विल स्लोली इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. चलो, आई विल गिव यू अ मिनट, नॉट मोर देन दैट, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आई विल गिव यू अ मिनट, एक बार देख लो, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक? डी लग रहा है इसका आंसर. सर, मैं स्क्रैच बैच से सर विल टॉक रिगार्डिंग योर मॉक टेस्ट का स्कोर. ओके, यू आर सौरभ यादव ना, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स है 1157, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सौरभ यादव, यू आर द सेम सौरभ ना? कॉन्टैक्ट के लास्ट 4 डिजिट्स आर 1157. नो,
नहीं, as I said, वीडियो सेक्शन में जो भी जाता है वो रिकॉर्डेड होता है. So that was one of the recordings that I provided. I'll be providing content in recordings as well and live as well. दोनों भी अभी. क्या हुआ इसका क्वेश्चन? चलो. वेरी गुड. अच्छा, I'll reach you out. You are one of our paid students. I'll reach you out इसके लिए, ठीक है? या डू रीच मी आउट ओवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप, किसी पे भी करते इस पे बात आराम से. हाय सर, मैं आ गई. वेरी गुड सर. अच्छा, नाउ गाइस, check this out. Find the sum of the first 50 terms of the series. First 50 terms of the series. First term, second term, third term, 50th term क्या होगा? What would be the 50th term? The 50th term of this series would be, logic से we can write it out. 1 upon 50 into 51 into 52. This would be the last term of the series, right? Let's analyze the terms. First term, इसको analyze करते हैं. First of all, you need to spend some time to understand the pattern. थोड़ा सा टाइम देके, वेलकम तंजीरो, थोड़ा सा टाइम देके ना अंडरस्टैंड द पैटर्न. If you closely observe the first one, so it is 1 upon 1 into 2 into 3. Okay, so this can be written as technically 3 minus 1 upon 1 into 2 into 3 to the power half, 1 by 2, right? ऐसे लिख सकते हैं ना? बोलो yes sir. And when you split it up, so half 3 split हुआ तो 1 upon 1 into 2 minus 1 upon 1 in 2 into 3. This is, and this was one of the doubts asked from one of the student recently. ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है. सेकेंड टर्म को भी अगर हम लोग एनालाइज करें, मतलब टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ओनली, 2 into 3 into 4. So this can be written as 4 minus 2 upon 2 into 3 into 4. Right? It's the same thing. Again, let's split it. So you will get 1 upon 2 into 3 minus 1 upon 3 into 4. Okay. So you do understand the pattern, right? पैटर्न आपको समझ में आ रहा है. व्हाट वुड बी द लास्ट टर्म? आई मीन, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्टली आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन 50 into 51 into 52. This can be directly written as half 1 upon 50 into 51 minus 1 upon 51 into 52. Sorted? लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल. Now, when you add all of them up, अगर आप ऐड करते हो तो you will find out कि every second term gets cancelled out with the first term of the next term. This, so ultimately this will be cancelled out. What I'm left with? What I'm left with? Half. What I'm left with is half 1 upon 1 into 2 minus 1 upon 51 into 52, and that would be your answer. This is option B. This is option B. Very good. Sorted? Do you like the session? I am under the assumption कि you guys have been practicing QA for some time now. अगर आप day 1 पे आ रहे हो, this is the very first session you are attending, या हफ्ते दिन हुए start करके, so you might find it difficult. You might find it difficult to understand. So don't be demotivated कि सर बाकी के लोग कैसे कर ले रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे. This is the reason. Next question. बहुत simple सा question है, प्यारा सा question है. What is the maximum value of this particular expression? Tell me. I'll give you a minute to find it out. I'll give you a minute to find it out quickly, guys, as fast as you can. What would be the maximum value of this particular equation? Help me with this.
Come on. चलो, got some seconds left. A minute is sufficient to figure out what needs to be done here. Very good. Chalo, let's try this, beta. You need to find the maximum value of this expression. Okay, 1 upon something is given, and this is, as we can observe, a quadratic equation. This is, as we can observe, is a quadratic equation. अगर आपको maximize करना है इसका value, so the value of denominator should be minimum. So ultimately the whole question is, what would be the minimum value of this? Okay, let this be fx. Fx is equal to 2x square plus 3x plus 10. This is a quadratic equation. आपको fx का minimum value निकालना है. पूरा एजेंडा ये है. Now this is the quadratic equation जिसका a is positive. This is a is positive. A is positive. So this would be something upward parabola, right? अगर a positive है तो upward parabola. Okay. So upward parabola का मतलब क्या? इसका आप मिनिमम निकाल सकते हो. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इधर आप मैक्सिमा निकाल सकते हो या आप मिनिमा निकाल सकते हो. You cannot find out both of them. Okay. जैसे in this case, this is upward opening parabola and a is positive. So इस वाले particular case में you can find the minima and the maximum value would be infinity. Okay, if a was negative, when a is negative, तो इनके उस केस में कुछ ऐसा ग्राफ होता है, right? Quadratic equation का. So you can find out the maximum value over here, and minimum is minus infinity, right? And here you find out the minimum value, and the maximum value is infinity. Okay. Now both maximum and minimum you will find out at minus b by 2a. At minimum we will find minimum at x is equal to minus b by 2a. Okay. You need to put x as minus b by 2a. और इस minima का direct formula भी है. Minimum can be calculated as 4ac minus b square upon 4a. Either use this formula directly or put x is equal to minus b by 2a back into the equation. You will get the minimum possible value. Okay, both works. आपको जैसे proceed करना है वैसे proceed कर लो. Let's use this straight away formula है, and this is 4 into what is a is 2, what is c is 10, minus b square is 3 square is 9 upon 4 to the 8. So this is how much? 71 upon 8. The minimum value is 71 upon 8. So let's put 71 upon 8 in the equation. 1 upon 71 upon 8. This is the maximum value of this particular equation. 8 upon 71 was the right answer. Option D. Sorted? ये आप कर सकते थे. Or else what you could have done, और क्या कर सकते थे? X is equal to minus b by 2a. ये जो minimum value है ना, this minimum value 71 upon 8, you will get this value at x is equal to minus b by 2a. So you could have put x is equal to what is b? B is again 3, minus 3 upon 4. आप ये value भी अगर equation में put करते तो you would have gotten 71 upon 8. Option A is trap answer. Sorted? So how to find maxima and minima of a quadratic equation? And obviously, if you guys are aware of the differentiation always helps in maxima and minima, right?
मैंने बहुत बार आपको बोला है, अर्ज किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ओके इट्स गुड टू हैव द नॉलेज ऑफ दीज फार्मूलाज, बट डिफरेंशिएशन इज एवरग्रीन. Those who are from mathematics background have learned differentiation back in their 11th standard, because 11th standard में था differentiation, right, was not in 12th standard. So 11th standard में जिन्होंने भी differentiation किया है, they can take the help of differentiation का one of the applications was to find the maxima and minima, if I'm not wrong. तो उससे आप क्या कर सकते हैं, सपोज यू आर कंफ्यूज्ड इन एनी इक्वेशन, उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए मेरे पास नहीं है ना, तो यू कैन अप्लाई डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट एंड फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके, एक बार चेक कर लेना एग्जाम जाने के पहले, इट माइट बी हैंडफुल. चलो नेक्स्ट, अगेन इजी क्वेश्चन, आई गिव यू अ मिनट, गिव मी द आंसर. ट्रायल एंड एरर से बहुत फास्ट इसका आंसर आ सकता है, बट आई हम्बली रिक्वेस्ट यू गाइस कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा वो चेक करो, ठीक है. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द कॉन्सेप्ट. अभी ये जो भी स्पेसिफिक टॉपिक वाइज है ना, उसके मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, मॉड के लिए, इनइक्वालिटीज के लिए, फंक्शंस के लिए, ग्राफ्स के लिए, इंस्टॉलमेंट्स के लिए, आई मीन जो ये सारे इस टाइप के टॉपिक्स है ना, इनके वीडियोस अपलोड करूंगा मैं लाइव में. वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सम टाइम, फॉर 2-3 वीक्स एटलीस्ट. क्या इसका आंसर, गिव मी द आंसर गाइस, क्या होएगा इसका आंसर. छोटे क्वेश्चन 1 मिनट यार, सफिशिएंट है. छोटे क्वेश्चन 1 मिनट, गिव मी द आंसर यार. मेरे पे नहीं है, क्या नहीं है पीके, ठीक है. मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन वो वीडियो भी मैं ला दूंगा, ठीक है. x square y is equal to 30 to find the least possible value of x plus y. इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली you use what? Generally you use am is greater than equal to gm. Okay, we know this. Generally this concept is used. Okay. Now guys, देखो how to deal with this. You have to find the least possible value of x and y. Okay, x plus y, sorry, x plus y. आपको क्या करना होगा ना, the best way, and this always works. You can always go by trial and error से भी आंसर आसानी से आ जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या है, ट्रायल एंड एरर इन दिस क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन आपको प्रॉब्लम दे रहा है. ओके, सो अगर चौथा भी एक नंबर होता तो ट्रायल एंड एरर वाज अ बेटर ऑप्शन. 6 आ गया तो ठीक है, बट कैनॉट बी डिटरमाइंड इंडिकेट्स कि आंसर 6 से कम भी हो सकता है या आंसर मोर देन 1 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है. फोर्थ ऑप्शन भी अगर एक नंबर होता तो फिर ट्रायल एंड एरर वुड हैव बीन गिवन मी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू मार्क द ऑप्शंस. देखो x प्लस वाई है, आप x को स्प्लिट करोगे कितने टर्म्स में, इक्वली स्प्लिट करोगे x का जो पावर है. सो x का पावर क्या है 2, x का पावर है 2. सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्प्लिट x इनटू 2 इक्वल हाफ्स, x बाई 2 प्लस x बाई 2. ठीक है, x का पावर है 2, स्प्लिट x इनटू 2 इक्वल हाफ्स. एंड y का एक ही पावर है, सो यू डिड नॉट स्प्लिट y. सो यू विल गेट दीज थ्री टर्म्स, और बड़े प्यार से इन तीनों टर्म्स में, हाँ, तो इन तीनों टर्म्स में यू कैन अप्लाई am is greater than equal to gm. So now your three terms to consider would be first term, second term and third term, and you can proudly say that am of x by 2 y
इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ऑफ x/2 बोल सकते हैं am of x/2 is greater than equal to gm of x/2 what is am of this? So x/2 plus x/2 plus y upon 3 must be greater than equal to third root of x/2 into x/2 into y. Sorted. This will be adding up and will be giving you this again. So you will have x plus y by 3 is greater than equal to third root of, this is x square y by 4. X square y by 4. This works every time, right? What is x square y? I have x square y as 32. I have x square y as 32. Put this as 32. So this would be x plus y upon 3 greater than equal to 32 by 4 is 8. 8 का third root is what? 2. So x plus y is greater than equal to 6. So what's the minimum value of x plus y? 6. Sorted. ये छोटी छोटी चीजें हैं which I wanted. रूट में कैसा आया? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है पीके बेटा? इन तीनों का अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स x plus 2 plus x plus 2 plus y by 3. ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? n टर्म्स का. n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल द n टर्म्स. सो लेट्स से अगर दो टर्म है a1 एंड a2, n2 है यहां पर, तो स्क्वायर रूट होगा a1 a2 का. अगर तीन टर्म है a1 a2 एंड a3, सो क्यूब रूट ऑफ a1 a2 a3, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन. अगर एक और टर्म होता, लेट्स से a4 भी होता, तो फोर्थ रूट ऑफ a1 a2 a3 a4, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है. ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, एक बार देख लेना, ठीक है? प्रोग्रेशंस में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है उसका बेसिक्स देख लेना. एंड दिस इज inequality, correct inequality that we have derived in progressions. am of a positive numbers is greater than equal to gm of those positive numbers, right? बोलो हाँ जी. Sorted. Very nice Tanjiro. ओके अब ये देखो, ये क्वेश्चन था. अगेन दिस क्वेश्चन वाज सेंट टू मी बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स. देखो रीड आउट करो. लैंग्वेज है बस, लैंग्वेज. रीड इट केयरफुली. आई शाबाश तंजीरो. वही तरीका है, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं. यू कैन डू दिस एवरी टाइम. अगर y का भी कोई पावर होता तो y को उतने पार्ट्स में स्प्लिट कर देते. नेवर माइंड सौरभ गांगुली. लोडिंग शुड बी कंटिन्यूड. वेलकम टू योर. डू लाइक द सेशन बस. दिस वुड बी माय हम्बल रिक्वेस्ट आई फ्रॉम यू गाइस. आए हो तो लाइक करके जाना. टाइम खत्म. चल रहा है टाइम. मैं क्यूट हूं क्या ऐसा? पूरी जिंदगी निकाल दी हैंडसम बनने के चक्कर में, बना तो मोटा और क्यूट. देखो ये कैसा लगता है आपको पता नहीं. मतलब यू want to be heard that you are handsome, but technically लोग आपको बोलते हैं मोटा और क्यूट. क्या बोलूं? अरे सबका नाम लिखिए.
सर बेसिक चीज बता दो, कौन बेसिक कराया है स्क्रैच बैच में? इस देखो, माय डॉटर हैज रिटन एवरीबॉडीज नेम, जो भी चार्ट में है ना सबका नाम डॉटर ने लिखा है इस अपने छोटे से डायरी में। किसका किसका नाम लिखा है बताओ? मेरा फैमिली का भी लिखा है। फैमिली का भी लिखा है। आशना, अस्तित्व, प्रेरणा, तंजीरो, सिया, मिस्टर पीके, सौरभ, ऋतिक और लिख रही थी और नहीं लिखा है। बाय। स्क्रैच बैच, स्क्रैच बैच, स्क्रैच बैच, स्क्रैच बैच। ओके, लैंग्वेज है बस, लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, सॉरी तो डिफिकल्ट है यार, बहुत कुछ अजीब सा होगा। 100 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है amongst 11 students. There are 100 chocolates, 11 students. I am drawing a diagram for this, a visual representation. First guy, second guy, third guy, fourth guy, fifth guy, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th and 11th. ये हो गए 11 लोग। ओके, वेरी गुड। Students, student 1, student 2, student 3, student 4, student 5, student 6, student 7, student 8, student 9, student 10, student 11, and there are 100 chocolates distributed amongst them. 100 chocolates distributed amongst them. सबको दिया है, ठीक है। पहले चाइल्ड को मिला x1, दूसरे को मिला x2, तीसरे को मिला x3। पहले चाइल्ड को मिला x1, दूसरे को मिला x2, तीसरे को मिला x3, चौथे को मिला x4, पांचवे को मिला x5, छठे को मिला x6, x7, x8, x9, x10। ये जरूरत नहीं है लिखने की। यू नो व्हाट, फॉर दोज हु आर गुड एट वर्बल, ओके, आप लोग ये विजुअलाइज कर सकते हो। क्वेश्चन, आई एम डूइंग व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द टाइम बीइंग। I've yet not started to solve this question. These 100 chocolates have been distributed amongst 11 students, and x1, x2, x3, x4 are the number of chocolates given to those students. And what is x naught? X naught, x naught, x naught, x naught is the max value of all of this. इनमें से जो नंबर सबसे बड़ा है वो है x नॉट। इनमें से जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, राइट। सो लेट्स से अगर एक केस, इफ आई गिव 1 chocolate, 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 90 chocolate, so x naught is 90. X naught is 90. Okay, if I do this as, I make it 2 chocolate over here and I give 89 chocolate over here. So x naught is the max value. So x naught would be 89. You understand? X naught would be 89. And question में क्या करना है? आपको x naught को मिनिमाइज करना है। इसको हम 89 तक ला सकते हैं। 89 से कम ला सकते हैं क्या? What could be the minimum value of this? Let's say x11 is the maximum value. उस maximum value का minimum value क्या है? What could be the minimum value of this? So अगर मुझे minimize करना है तो मुझे सबको बराबर देना चाहिए। अगर मुझे minimize करना है तो मुझे सबको बराबर देना चाहिए। Like 11 students are there. I'll give 9 chocolates to everybody. In this case, x naught would be decreasing, right? But this is 99 chocolates, total 100 chocolate है। एक और chocolate किसी को भी दे दो यार। Let's give it to the last guy. So he is now having 10 chocolates, and then x naught would be 10, right? इससे कम x naught नहीं हो सकता है। x naught minimum would be 10. इससे नीचे नहीं जा सकता है, राइट।
That was the question. Verbal played a very important role here. Verbal played a very important role here. Okay. Sorted है everyone? Language था, question में कुछ नहीं था. But trust me, 70 to 80% of the students will just skip this question. In remaining 30%, up to 20-25% students will find कि ये कुछ अलग है. ये कुछ अलग है. Hardly 4-5% students who have the command over the entire syllabus will understand कि ये कुछ अजूबा नहीं है, and they will attempt this question to get the right answer. Okay, चलो. One of the student is Deepak asked me this question from YouTube. A doubt of Deepak's. Guys, help him with the doubt. He watches the recording. You got a minute. Try answering the question. देख के ही डर गए बच्चे तो. Come on, guys. Attempted. आ जाना चाहिए था आंसर यार. This is under 60 seconds question. This is under 60 seconds question. क्या हो गया? चलो. fx is equal to x raised to the power 5 minus 2x square plus 3x cube minus 4x square minus x plus a. f1 we can calculate very easily. I don't know बच्चे डर क्यों जाते हैं. तो इन जीरो से C और B बेटा. CS is option E. Okay. पता नहीं डर क्यों जाते हैं. F1 as simple as it is. Try and find F1. F1 के लिए क्या करना है? Put 1 instead of x. Put 1 everywhere. So 1 raised to the power 5 minus 2 into 1 square plus 3 into 1 cube minus 4 into 1 square minus 1 plus a. How much is this? This is a minus 3. This is a minus 3. So f of 1 is a minus 3, right? Similarly, f of minus 1 निकालो. What is f of minus 1? So minus 1 put करेंगे x की जगह. Instead of x, I'll put minus 1. So that would be minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, plus 1, plus a. This gets cancelled out. This is a minus 9. And now f1 upon f of minus 1 is greater than 0. This gives me a minus 3 upon a minus 9 is greater than 0. For what values of a? क्या question है ये? For what values of a? Number line, right? Draw the number line. Draw the number line. The nodes are 3 and 9. Right? यहाँ पर है infinity. Here you have minus infinity. अगर if a is less than 3, अगर a 3 से छोटा है, so numerator is negative, denominator is negative. In this region, the value would be positive. In this region, it would be negative, right? 3 और 9 के बीच में. This would be positive, this would be negative, the value would be negative. Again, it would be positive over here. So the range of a would be minus infinity say 3
both in open bracket, union 9 to infinity, both in open bracket. ऑप्शन सी, सिया कैसे होगा ये बेटा? नाइन टू इंफिनिटी है ना बेटा, not 3 to infinity, 9 to infinity. You goofed up with the notes. The notes are 3 and 9. Minus infinity to 3 and then 9 to infinity, Chotu. Okay. Very well. Jump to next question. अच्छा, tell me quickly. इसके options थे, मैंने options हटा दिए. I give you 90 seconds. I want कि आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं इसका क्यूब रूट. Give me cube root of this. Give me cube root of this. इसका क्यूब रूट निकालो. चलो. And do like the video, everyone. तीन और चार के बीच. ओके. ऐसा वेरी गुड सिया. चलो, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट दोनों निकालना सीखना है आपको, ठीक है? स्क्वायर रूट भी निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट भी निकालना आना चाहिए फॉर एनी something which is in the form of surds or indices. This you must have learned, or you should have learned in surds and indices. Okay, देखो इसका क्यूब रूट लेट्स से is x plus root y. Okay, इसका क्यूब रूट x plus root y है. So we have to find out the value of this. ये निकालना है. Okay, x चाहिए, y चाहिए. अगर इसको क्यूब किया, x plus root y का क्यूब किया, so I should get this number 26 plus 15 root 3. Okay, without any hesitation, without any hesitation इसको क्यूब करो बेटा. a plus b whole cube is क्या है? a plus b whole cube, a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab, a plus b. इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया तो यू कैन राइट एज a square b plus 3ab square, right? Use this. So this is x cube plus y root y plus 3x square root y. Okay, and then plus 3xy is equal to 26 plus 15 root 3. बोलो हाँ जी. वेरी गुड. लो रूट वाले इकट्ठा कर लो. सो एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस y प्लस 3x स्क्वायर root y is equal to 26 plus 15 root 3. You can compare the terms now. So y is 3 and 15 is y plus 3x square, 26 is
x cube plus 3xy, right? So mention the terms. X cube plus 3xy is 26, or 3x square plus y is 15, and I know that y is 3. Y is equal to 3 put कर दो इसमें. Y is equal to 3 put कर दो. So y is equal to 3 put किया here. So you will get x square is equal to 4, or x is equal to plus minus 2. Plus minus 2. Okay. X is plus minus 2. And यहाँ भी y is equal to 3 put कर दो. So you will get x cube plus y is equal to 3 put क्या? You will get 9x is equal to 26. But when you put x is equal to minus 2 over here, na, LHS will not be equal to RHS. देखो x की दो वैल्यूज है आपके पास, +2 एंड -2. आपने x is equal to -2 पुट किया, so this would be -8 plus 18. So this is 10, which is not equal to 26. For this reason, x cannot be -2. X is equal to 2 is satisfying this. 8 plus 18 is equal to 26. So x क्या है? 2. X क्या है? 2. So the cube root is 2 plus root 3. Correct answer to this question is 2 plus root 3. Okay, very good. Sorted. Quadratic में भी you compare terms. Keep this in mind. No issues with Mitra. Do attend the session beta from here. And quadratic में also you need to compare terms. Moving forward, I'll bring questions जहाँ पे आपको square root भी निकालना है for certs. Okay, exam में these small concepts they help a lot. They help a lot. Okay, so you should be aware of this. You should be aware of this. And today I have brought smaller questions क्योंकि अटक जाते हैं बच्चे यहाँ पर. How to find cube root, how to find square root, okay, language and this, how to deal with such questions, okay, छोटा question है, but how to deal with it, okay, get this understanding. And now we are going to step up our level, this batch, this particular series, हम लोग अब पूरा का पूरा स्कोरिंग के ऊपर ध्यान देंगे. कैट 25 में हाउ टू बूस्ट आवर स्कोर, हम लोग हाउ टू बूस्ट आवर स्कोर उस पर ध्यान देंगे अब. ठीक है, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. आई विल गिव यू अ मिनट. आई विल गिव यू अ मिनट टू अंडरस्टैंड, रीड दिस आउट. दो ऑप्शंस में ऐड कर रहा हूं, लाइक जस्ट अ सेकेंड. पाई इज टू 2, 2 is to pi e nota. Okay, I'll give you 1 minute now. Abhi se. Now for this question, I'll give you 90 seconds to ponder. 90 seconds. Come on, guys. एग्जाम नियर आ रहा है, थोड़ा डर लग रहा है. इट्स वेरी नेचुरल. डर लगना इज गुड. आप मतलब यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन. ठीक है, दिन में 10-15 मिनट निकाल के डर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. बी अफ्रेड, कोई दिक्कत नहीं है. सब डरे हुए हैं. सब डरे हुए हैं. डर का भी टाइम टेबल 10-20 मिनट्स अ डे. चलो ट्राई दिस. Come on, guys. Quickly. That time's up, I believe.
In the given figure, there's a triangle ABC. ABC is a right angle triangle. Triangle ABC is a right angle triangle. Very good. Where BC is less than AB. Awesome. BC AB से छोटा है. With B as the center, a quadrant of a circle is drawn. So B को center पे रख के एक quadrant draw किया, right? And since BC is equal to AB, तो obviously यहाँ पर कहीं पर आएगा point. Like let's say this is D. Let's say this is point D. Okay. Now read it carefully. Reading plays a very important role. Reading will play a very important role at least in 3-4 questions of your CAT 2025. Okay, language based question होंगे वो. If the area of the right angle triangle lying outside the quadrant, what is the quadrant? ये एक quadrant है. This is a quadrant. This is the quadrant we are talking about here. Okay, this is the quadrant we are talking about here. The area of the right angle triangle lying outside the quadrant. मतलब हम किस एरिया की बात कर रहे हैं? We are talking about this area. Like इसको X बोल देते. We are talking about this area. Okay. Is equal to the area of the quadrant of the circle lying outside the triangle. This area is equal to area of the quadrant lying outside the triangle. So इस क्वाड्रेंट का एरिया जो ट्राइंगल के बाहर है, मतलब दिस, ये छोटा वाला एरिया. सो दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी? ए बी बाई बी सी निकालना है. ए बी बाई बी सी निकालना है. बच्चे फ्लैट सर कैसा करेंगे? हमने वी हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स. सर्कल्स में वी लर्न्ड ऑल दोस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सेंटर, chord, alternate segment theorem, exterior angle theorem, cyclic quadrilateral, sir, and secant tangent theorem, and we learned in center, circumcenter, orthocenter, everything. अब यहाँ पे क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा. Let's say area of this is y. ये area y है. Okay. What is the area of the triangle? X plus y. Area of triangle. Area of triangle ABC क्या है? X plus y. What is area of the quadrant? What is the area of quadrant? BDC. Let's say. चलो area of quadrant. Area of quadrant. BDC. ये क्या है? सर ये भी X plus y है. Area of this quadrant is X plus y. So technically area of the triangle is equal to area of this quadrant, which is 1/4 of the area of the circle. Okay, area of this quadrant is nothing but 1/4 area of this circle. चलो start करो. I can write area of ABC, triangle ABC equals area of quadrant BCD. This is half into base into height. Half into base is BC, height is AB. What is this quadrant? सर ये क्वाड्रेंट क्या है? दिस इज 1/4 ऑफ द सर्कल. सो उस सर्कल का एरिया क्या होता? सर उस सर्कल का एरिया होता पाई इंटू BC स्क्वायर, बिकॉज BC इज द रेडियस. ओके, बट दिस इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ दिस सर्कल. सो डिवाइड बाई 4. सॉर्टेड. खेलो अब. BC गॉन. यू नीड टू फाइंड AB अपॉन BC ना. देखो दिस इज गॉन इन S2. So AB upon BC. इधर लाओ. This is pi by 2. Nothing but option C. Correct answer was option C. Very good. Correct answer was option C. Pi by 2. Sorted. Understanding. You are doing all the things in the world, but छोटे छोटे क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं. Next question, and maybe the last question for today. I'll give you a minute to figure this out.
I'll give you a minute to sort this. Try this one. Little bit. Okay. Chalo, guys. Try this. Do like the session, everybody? Time's up. Time's up. Chala. ADM are drawn perpendiculars to BC in a triangle ABC. So there is this triangle ABC. AD and EM are perpendiculars. Okay. The length of AD is 4. The length of AD is 4 and the length of EM is 1. The ratio of area of triangle AEC to that of BEC. AEC to that of BEC. What is the ratio of the area? Very good. अच्छा guys, क्या given है? Let's investigate with the resources that we have. हमें given है EM का length. Okay. हमें given है AD का length. What is EM perpendicular to BC? What is AD perpendicular to BC? And question में area वगैरह की बात हो रही है. So EM से what can I calculate? One of the things that I can calculate is area of triangle BCE. I can calculate area of triangle BEC. Right? ये कर सकते हैं ना, half into BC into EM. Right? कर सकते हैं. And AD से क्या calculate कर सकते हैं? AD again area of triangle ABC. Area of triangle ABC, which is half into BC into AD. EM is 1, AD is 4. 1 and 4. So ultimately इनके area का ratio क्या है? 1:4. What is the ratio of their areas? Sir, half cancel out, BC cancel out. Ratio of their areas is 1:4. So let's say area of triangle BEC is X and area of triangle ABC is 4X. Diagram में देखो, ABC is 4X. BEC, this is X. So this would be 3X. This would be 3X, right? The total area is 4X, out of which this smaller area, BEC, is X. This would be 3X. Hi, na? Sorted? Very good. What was asked? Ratio of area of AEC upon BEC. 3X upon X, 3:1. 3X upon X, 3:1. Take one question for your practice. Put answer to this question in the comment box. Okay, try this. And एक E है option. Let me put E, nota. And if you find nota is the answer, तो आपको correct answer comment box में डालना है. Correct answer comment box में डालना है. Nota, none of the above. Nota is none of the above. Okay. If you feel that nota is the answer, तो correct answer comment box में डाल देना. ओ बाबा रे. चलो. Take this one more question for your practice. प्यारा क्वेश्चन है, इजी है, इजियर साइड पे है.
ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अटेम्प्ट करके आंसर टू बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सी होगा इसका क्वेश्चन मार्क, सी नहीं होगा इसका आंसर। नहीं नहीं वेद मित्रा, दिस इज द फर्स्ट सेशन, तो छोटी छोटी चीजें आपको ये चीजें एग्जाम में दिखती है एज अ पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। ओके, आई स्टार्टेड बाय सेइंग कि धीरे धीरे लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे। लाइक जैसे हम लोग का लेवल पहले था प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट वी यूज्ड टू डू वर ऑफ गुड लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है उसमें। एंड आते हैं, पहले तो इससे भी इसी आते हैं। Any slot you pick, I'll show you at least 7-8 questions easier than this. But ये छोटी छोटी चीजें हैं and these are part of the calculations, आपको दिखता है। Okay, चलो। If you want to be a part of my official telegram, मैं ये आज से शेयर कर दूंगा ये नोट्स सारे। I'll share it on this official telegram group. Okay, जो भी नोट्स है इस पे मैं शेयर कर दूंगा। स्कैन इट एंड बी अ पार्ट ऑफ माय ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। चलो बच्चा, हैव अ ग्रेट डे अहेड फॉर द टाइम बीइंग। मिलते हैं डे आफ्टर इन द मैराथन। सो सैटरडे को हम मिलेंगे, कल एक वीडियो आएगी वो देख लेना। और सैटरडे को हम लोग मिलेंगे मैराथन में एंड संडे को आई विल बी कमिंग अगेन। मैराथन वुड बी ऑफ anywhere between 5 to 6 hours, all three sections combined. All three sections combined. Quant ka part would be roughly 2 hours in it. DLR would be roughly 2 hours, and PRC would be anywhere between 1 to 2 hours. Planning to start at 5 p.m. But other my fellow colleagues will decide on that क्या करना है. Okay. चलो बाबा, have a great day. जाने के पहले do like the session. Keep working hard. You have only September. This is September 11th. 30th of November, you have 2.5 months, got 75-80 odd days left. Work hard. चलो, have a great day guys. See you again. सुबह का देखते हैं बेटा, if others are comfortable, we'll make it in the afternoon. Okay. चलो, signing off बेटा. I have a paid class.